interaction. Members of group, they act and react towards each other. Okay. Meaning by they mutually influence. Mutual influence है that party A influences party B and party B influences party A in a group. Okay. Mutual influence. Okay, Rabia, आपने कितनी दफा मोहसिन सॉरी हसन साहब को जाके कहा है कि सर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, आपका जो नॉलेज है उसका विजडम है उसे मतलब मैं लर्न करना चाहती हूँ. यू हैव एक्टेड टुवर्ड्स इट. सर बहुत दफ़ा कुछ पूछना हो तो असाइनमेंट्स में इस तरह से क्लास के दौरान हम भी करती थी कि कुछ नहीं समझ आ रही तो पूछती थी. किसको? अली भाई से. इसके अलावा किसी को नहीं? ज़्यादातर AQ से अली भाई से ही किया. फिर जो अकाउंटिंग्स वाले सब्जेक्ट्स थे उसमें मोहसिन और वकास से भी हम करते थे. बट ज़्यादातर अकाउंट्स वाले जो सब्जेक्ट्स थे उसमें फिर मोहसिन और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है वकास का, उसमें फिर इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता था. अच्छा. और वकास, आप राना साहब के पास, आप राबी के पास कितने दफा गए हो कि यार तुम्हारी सीपी ब्रिलियंट है, तुम्हारी आर्टिकुलेशन ब्रिलियंट है, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ कि कैसे सीपी अच्छी ली जाए, असाइनमेंट में तुम किस तरह आर्गुमेंट लिखती हो. आपने अप्रोच किया? आपने यस सर, काफी दफा किया. अच्छा, गुड. ठीक. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स में लोग इतना एक्ट और रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, they just keep to themselves. अच्छा, एक चीज होती है नॉर्म्स. नॉर्म्स समझते हैं आप? What are norms? So group, they perceive themselves as a group. Okay, they have effective relationships, they interact, act, and they mutually influence each other. Okay, and they have norms. What are norms? So norms are actually social normal behavior. Standardized. Yes, sir. Standardized. Normal. Norm is from, I think, normal. I think. Normative. I mean, it's what is, it's based on expectation. What is expected of you? And role theory में से है, and what you can expect from other people. Okay, so let's say the doorbell rings and it's my father's friend there. So I'd say अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, आए बैठे, कल आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे. ठीक. दरवाजा खुलता है और मेरा दोस्त होता है, तो मैं क्या उससे ऐसे बात करूंगा? नहीं, चेंज हो जाएगा. वो तो वो कहेगा कि भाई तेरा क्या, मैं को कैसा है, इधर आ बैठ. ठीक. या फिर अगर मैं अपने फादर का फ्रेंड को, जिगर कैसा है, इधर हो तुम. So if you deviate from the normative behavior, okay, the group does not approve of it, and there's a good chance that you might not only face the wrath of the group, maybe in the severe cases be thrown out of the group. Like if I come home and I see my father washing dishes and the servant sitting on the sofa reading newspaper, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाऊंगा. क्यों?
कहा सर ये नॉर्म नहीं है, नॉर्म नहीं था आपके घर का। नॉर्मेटिव बिहेवियर से चीजें हिल गई है, ठीक। सो ग्रुप्स हैव नॉर्म्स। सो व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ EMBA 4? सर नॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट्स भी बोल सकते हैं या वो अलग चीज है? मैं इस पे आता हूँ, इसे टू पर्सपेक्टिव से पहले आने से पहले रोल्स, as far as these norms are formed around roles like father, okay, like HOD, okay, like dean, okay, like CEO, okay, like CLO, Chief Learning Officer, okay, like sister, okay. So they're around roles, ठीक? So insofar a group has roles, and these norms are formed around these roles. So you expect the CEO to behave in a certain normative way, or the sister to behave in a certain normative way, okay, or the servant एक certain normative उसके, ये रोल थ्योरी है, शायद आपने पढ़ी हो, ठीक। तो ब्रीफली हमारा टाइम एज यूजुअल ओवररन हो रहा है। देखें नॉर्म्स आपके क्या हैं? EMBA 4 के, सर EMBA के नॉर्म्स में EMBA 4 के सर एक नॉर्म तो ये है कि एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट एक हद तक जितनी जो चाहता है उसकी करे। एक तो ये नॉर्मल है। बाकी जो एक फ्रेंड्स के अंदर जरा थोड़ा ज्यादा वो हो जाते हैं आप, वो रोल नहीं है सर, मतलब है, फ्रेंड्स हैं लेकिन एक जी रोल किसका क्या है, सॉरी सबका रोल क्या है? रो सर रोल्स तो रोल का कोई ग्रुप का सेंस रोल्स ऐसे डिफाइन तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट है सबका रोल, यस स्टडी सर। ठीक। जी स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें जो नॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स होते हैं ना, मैंने कहा था हनी बी के जो सेल्स होते हैं, इसमें दो पर्सपेक्टिव है, ठीक। एक पर्सपेक्टिव ये है कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमेटी बनाई, ठीक। क्या वो कमेटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उनसे आइसोलेटेड हो सकती है, उनसे उनसे अपने आप को शील्ड कर सकती है? लेट्स सर से अगर तो वो जी सर अगर तो वो इनोवेटिव कंपनी है ना जो वर्किंग करती है अपने इनोवेशंस पे, नहीं नहीं, फिर तो वो ये मैं क्या जो भी है, जो भी नॉर्म्स है, क्वेश्चन, लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। मैंने आपको कहा WAIT, why am I talking? The thing is, I've asked you a very specific question. एक कमेटी जो कि एक ग्रुप है या एक टेम्पररी ग्रुप है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद, लेट्स से कोई हरासमेंट इशू हो गया, ठीक। सो हमने कहा कि वो कमेटी एक ग्रुप है, हमने कहा ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि जी क्या वो कमेटी के नॉर्म्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस होंगे या इंसुलेटेड होंगे? कमेटी अपने नॉर्म्स बनाएगी, लेट जी, ये क्वेश्चन है। इंसुलेटेड होगी है जो कि कंपनी फॉलो करती हुई आ रही है। इंसुलेटेड नहीं होगी, इंसुलेटेड नहीं होगी अच्छा, सर, इंसुलेटेड नहीं होगी, बल्कि वही नॉर्म्स जो कंपनी के नॉर्म्स है उसी के अंदर ही उसका उनके नॉर्म्स होंगे। बहुत कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि नॉर्म्स में नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आउट ऑफ इन वंस इन अ ब्लू मून है, उसमें मे बी वो डिफरेंट नॉर्म्स सेट कर लें, अदरवाइज नॉर्म्स के अंदर ही होगी। आमतौर पर कंपनी के नॉर्म्स सब कवर कर रहे होते हैं।
This is one perspective. Let's say अगर कंपनी में आप, it's a yes man culture, everybody says yes to the CEO, ठीक, हर कोई नौकरीबाजी के चक्रों में, ठीक, वही नॉन कॉन्फ्रंटेशनल मैंने कल्चर जो आपको बताया था, शूट द मैसेंजर अप्रोच वाली वो जो बात आपसे की थी मैंने, ठीक है, कि सारी अच्छी बातें ऊपर पहुंचाई जाएं और गलत जो भी बुरी न्यूज़ है नीचे दबाई जाएं। तो कमेटी में जो सीईओ है, जो कमेटी का चेयरमैन है, एंड कमेटी मेंबरशिप, व्हाई पीपल वांट टू बी HODs, because most committee members ship is ex officio, so कमेटी का हेड किसी HOD या डिपार्टमेंटल हेड को ही लगाया जाता है। तो क्या वो जो ग्रुप ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ कमेटी है, क्या उसके सामने बोलेंगे, इश्यूज को कन्फ्रंट करेंगे, उसको कन्फ्रंट करेंगे कि सर ये एक सीरियस इशू है, हैरेसमेंट आजकल एक इशू बनता जा रहा है, अगर हमने इस मसले को हल ना किया तो ये बलून हो जाएगा, चुप हो जाएंगे ना। क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म भी ये है कि जी यार बुरी गलत हुआ है। मैं आपको एक 100 ईयर्स अबाउट 90 ईयर्स की लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च शेयर करूंगा आपके साथ अगली क्लास में। सो एक है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म इन्फ्लुएंसेस द डिपार्टमेंटल नॉर्म्स, ठीक, एक पर्सपेक्टिव ये है, ठीक। हाँ जी सर, जो आपने यस मैन वाला कहा है उसमें तो सर नहीं करेंगे लोग, वो यस मैन ही करेंगे कमेटी में भी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो इंसुलेटेड या आइसोलेटेड नहीं होंगे, जो कंपनी के ओवरऑल नॉर्म्स हैं वो कमेटी में भी आ जाएंगे, वो डिपार्टमेंट में भी आ जाएंगे। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये आगे आपको चूंकि इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ना, हर चीज लिंक है ना। एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाईजान हर डिपार्टमेंट अपनी एक आइडेंटिटी, लॉरेंस और लॉर्श ये दो लोग हैं, मैं नाम आपको बाद में यहाँ लिख दूंगा, लॉरेंस एंड लॉर्श डिफरेंशिएटेड, और हर डिपार्टमेंट अपनी एक आइडेंटिटी बना देता है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होते हैं, देयर इज फाइट फॉर रिसोर्सेज। पढ़ेंगे रियलिस्टिक, यार ये सांस कम लें जो भी ले रहे हैं, ठीक है, या माइक अपना ऑफ कर। हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट टाइम लाइन्स होती है, मैंने आपको कहा था लॉरेंस एंड लॉर्ड डिफरेंट, लाइक R&D की टाइम लाइन अलहदा होती है एज कम्पेयर टू सेल्स। इसके अलावा आप ये नोट करें कि जो है R&D के आर्टिफैक्ट्स भी फर्क होते हैं, वो लोग लोफर्स में या डांगरीज में या खाकीज में कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोग लाइक बिस्पोक सूट्स में होते हैं। एक ये थीसिस है कि नो, एवरी डिपार्टमेंट develop its own identity and its own norms, ठीक है। मैं बस 1 मिनट और मतलब ये लिख लूंगा मैं बाद में और आपको कर दूंगा। इसके अलावा एक और चीज है इसमें, एक और पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स, बैंक वायरिंग ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स के नॉर्म से अलग ग्रुप्स बनाता है, बल्कि कन्फ्रंटेशन, लाइक यूनियंस। Unions are formal but they start as informal groups, ठीक। तो ये होगी बात नॉर्म्स की, रोल्स की, और ऑफन रोल्स, ऑफन आप अपने डिपार्टमेंट में, मैं आप ये बात करूंगा, people ask certain questions like who am I in this group, what is my role expectation, again we role ambiguity, is there anybody measuring group performance, okay, what are my individual needs, what are my individual objectives, are they being met or are they in line with the group's objective? Now what gets measured and rewarded gets done. EMBA 4 या आपके डिपार्टमेंट का कोई ऐसा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है जो कि ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस मेजर करे? हाँ?
जी सर ये एनुअल ग्रेडिंग की जो सेमेस्टर ग्रेडिंग है यही ओवरऑल है सर, और तो वो तो इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल है बिल्कुल सर. So when you are when you are appraised and incentivized and rewards behaviorism. Behaviorism. What are the all behaviors are a function of consequences. If you don't perform individually, what would be the consequences? Bad. So you work for individual goals. If the whole group EMBA4 does not perform as a group, what would be the consequences? थक गए यार. सर अगर एक पूरा ग्रुप सब नहीं सर, अगर पूरा ग्रुप पास नहीं करेगा ना सर, हमें जो एक सर वैसे ही ऑफिशियल तो नहीं था, अनऑफिशियल हमारे लिए ये था कि अगर वी आर वेरी लेस पीपल, तो हमें ये था कि अगर ये एज अ ग्रुप सब भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे या कुछ लेफ्ट आउट या पे एफ आ जाएगा किसी का, तो नेक्स्ट में भी जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्स ही सैक ना कर दे हमें. शुरू में ये भी थोड़ा सा था, तो एज अ ग्रुप एक हमारे अंदर था वैसे असेसमेंट को. दिस इज मैनेजमेंट. इसको मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका मिड टर्म को आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह और क्विज़ेस होते हैं, इस तरह सा कुछ यार्डस्टिक है आपके डिपार्टमेंट में, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मेजर की जाए कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं यानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स? तो यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, वैसे आपने बीबीए वगैरह या अपने बैचलर्स में ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं? यस सर. Were they a pleasant experience? नो सर. अच्छा, ठीक. The last point is, seventh is present goals. Now, many people say they have common goals. No. A group has goals, but there are two types of goals: individual goals or needs, and overall group's goals. To sum it up, what is a common goal? When individual goals are in line with that overall organizational goals. ठीक. इसमें आखिरी बात कह रहा हूँ, इसमें एक एक्सेप्शन है. ठीक. और वो एक्सेप्शन ये है ऑफ कॉमन एनिमी. इफ देयर इज अ कॉमन एनिमी, जो ग्रुप है वो एकदम कोहेसिव हो जाता है, अपने डिफरेंसेस भूल जाता है, और ग्रुप ये समझता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप के एक ही गोल है, टू बीट द कॉमन एनिमी. In this case, in the first case, it's